Little better. Yeah. From there only. Yeah. No, bring it here. Yeah. It from here connected. From over there. So here, let's see. Turn it off. Turn it off. Little better. So hello everyone, and here we are back live once again. And it's been many days we couldn't interact, but today we'll do it. Highs and hellos. There are greetings. Wait. Not a lot, but still. There are greetings all over. But then we have Himanshu math and science classes. Kya haal hai? Well, I'm pretty good, and it's buffering. How to get success? Tell your opinion. If you talk about opinion, so I will basically say कि success is basically कि आपने कितना मेहनत किया है plus कितना efficiency के साथ या फिर productivity के साथ किया है. So that's the product of it. So that is the amount of such Chaudhary. Sinha, it's buffering again. It's buffering again. Okay. So Raj Sinha, how you prepared for IPHO? Then in this case, if you ask me कि मैंने IPHO के लिए कैसे prepare किया, like well मैंने IPHO के लिए prepare नहीं किया, मैंने अभी तक exam दिया भी नहीं, and well IPHO is pretty interesting examination till the time I'll be eligible for it. जैसे पहले I was also thinking कि I'm about to give JEE. Connection is again not stable. Okay, so पहले I was also thinking I had to be gaming JEE, लेकिन now I'm not that sure कि मैं actual में JEE करूँगा कि नहीं. So it might go the same with IPHO, but I guess I will do it. Mathsing, how to complete backlogs in class 11. Backlogs in class 11, that means you're definitely entering in 12th, and if you're entering in 12th, so you can do it कि एक time आप 11th पढ़ो, दूसरा time 12th पढ़ो. Now that is something जो कि हर कोई आपको बताएगा, लेकिन 11th के basics समझे बिना you cannot understand 12th. तो obviously I would say कि जितना time मिल रहा है, first of all you have to try to focus to complete the 11th, at least the basics, and उसके बाद only you can do 12th. Himanshu math and science classes, what is your goal? Bro, please batao. Well, that is obviously I'm aiming for research. The Indian racer. Hello Sarim, how are you? Well, I'm fine. Raw and rotten. How to deal with feeling low, bhai? In that case, again, if you're like feeling low, so just go and pursue some of your hobbies. We have a question. So I also start like anyone else. It's just you have to increase your productivity and increase the time that you're giving to particular studying particular thing. So
पोकेमन मास्टर, मेरे सर ने स्कूल में बताया था कि एसके वंडर चैनल को देखना, वो भी आपकी तरह फिजिक्स टीच करते हैं। ओह, आई सी। सो इन दैट केस, वेल एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट यू, बट आई विल सी। ओके। आर्मी स्टेटस आदित्य कुमार, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान्स टू डू रिसर्च इन फिजिक्स? यहाँ पे देयर इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या संजय कुमार जीबी, हाउ टू सॉल्व जे क्वेश्चंस मोर फास्टर? एंड या दिस इज एब्सोल्युटली एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको जे के क्वेश्चंस ज्यादा फास्ट सॉल्व करने, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी कि जे के क्वेश्चंस का ऑब्वियसली स्टैंडर्ड नॉर्मल क्वेश्चन से हाई होता है। इसको अगर और फास्ट कर सकती हो, जितनी फास्ट अंडरस्टैंड कर सकती हो, उतना ही फास्ट आप सॉल्व करोगे। सो समथिंग लाइक, ओके, सो समहाउ आपकी थिंकिंग स्पीड भी यहाँ पे, इनफैक्ट इट इज द थिंकिंग स्पीड दैट एक्चुअली मैटर्स। थिंकिंग स्पीड ही मैटर करती है। सो दैट इज, आपको अपनी थिंकिंग स्पीड ऑब्वियसली बाय सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड मोर टफ क्वेश्चंस एंड मॉडरेट क्वेश्चंस तभी आएगा। So you'll have to practice moderate and tough questions by setting timer. That is the thing. They have completed full syllabus of 11th and 12th. Yeah. Okay. Fazul Mirza, who is the person behind generating interest in physics in you? So physics में तो it was particularly Stephen Hawking, जिनकी वजह से मेरा interest develop हुआ. Like I read his book A Brief History of Time, so I got interested from that. Siona Dash, please help, tell how to increase IQ. Well, I'm not pretty sure कि, क्योंकि मुझे मेरा खुद का IQ नहीं पता. So in that case, I'm not pretty sure. And yeah, here it is. Bilon YT, bro, you wrote wrong title on live. It's 2023, not 2022. I just got the habit in that case. I will correct it. I will correct it, and उसके बाद it will be 23 only. Well, thanks, obviously, for pointing that out. Zunura, do you prefer taking notes? Well, yeah, but not like ऐसे notes नहीं कि you are just going and making them colorful as they can be, just like rainbow. तो वैसा भी नहीं. I will just take, मैं कोई भी book पढ़ रहा हूँ, कोई lecture देख रहा हूँ. In that case, I will just note down whatever is important over that. एंड उसके आगे there's nothing कि उसमें ऐसा edit करते रहो and then वैसा करते रहो. So you will see there are so many people out there जो कि इतने colorful notes बनाते हैं. They will either do it very lengthy या फिर कुछ ज़्यादा ही concise. So just make average note and it is okay. Don't spend very much time on that कि आप इसे जितना ज़्यादा better looking बना सको उतना. It should be neat and clean and nothing else. Okay. So Army status Aditya Kumar, what is your branch in physics? Well, modern physics, of course. Shorts trend, only intelligent people does that silly mistake. Well, what kind of silly mistake? Pulkit Sharma, yeah, I think this is the biggest question you have ever faced. I think I've read somewhere that you read and gain knowledge and about physics just from books. How are you able to solve such messy questions? तो यहाँ पे आई वुड से कि हाँ, मैंने बुक्स पढ़ा था. आई गेन नॉलेज अबाउट फिजिक्स जस्ट फ्रॉम बुक्स एंड आई एम एबल टू सॉल्व लाइक दीज क्वेश्चंस ऑफ जेईई एंड नीट एंड ऑल. तो इन दैट केस आई वुड से ऑब्वियसली ये पॉसिबल है इफ यू आर कंसिडरिंग इट दिस वे. तो ऐसा भी नहीं है क्योंकि बुक्स में एक्चुअल में वो इन्फॉर्मेशन है. द रेस्ट इज कि कितनी आपकी क्रिएटिविटी लेवल है कि क्वेश्चन कोई भी काइंड का आ जाए एंड यू आर एबल टू थिंक, यू आर एबल टू ट्विस्ट योर ब्रेन एंड थिंक बाय दैट पर्टिकुलर एंगल. तो यहाँ पे ये फैक्टर बहुत मैटर करते हैं. हाउ टू प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंड द क्वेश्चन, how to properly analyze the situation and how to properly carry out the mathematical techniques या फिर mathematical manipulations. तो ये obviously अगर आपने ये सब सीख लिया so it is just possible. Sanuraj Sinha, how are able of understand physics language in higher grades of books? Again, since आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो जाती है as you'll be leveling up. So जैसे लेवल अप करते जाते हो अंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग पावर इंक्रीज होती जाती है एंड इट जस्ट गोज इजी. Anurag Yadav, How to Solve University Physics with Modern by Hug D. Young and Friedman. I have PDF form of that book. It takes 2 hours to read only 4 pages. अब सिंस ये एक टेक्स्ट बुक है तो ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा. टेक्स्ट बुक में डेफिनेटली टाइम लगता है बट आप स्पीड अप करते जाओगे एंड इट विल जस्ट बी गेटिंग इजी. Zunurar, can you please show some of your notes? Well, someday if I think, then I will just do a community post if you ask. Anurag Yadav, SS Krotov. I have solved all questions of SS Krotov. I have tried it and definitely, obviously, a good book. द इंडियन रेसर. सारे मुझे भी फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है बट जब मैथ की हो तो मैथ में अपना इंटरेस्ट कैसे बनाए. मैथ में इंटरेस्ट बनाने के लिए यू हैव टू क्रिएट इंटरेस्ट इन नंबर्स एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नंबर्स के सिग्निफिकेंस क्या होती हैं और समथिंग लाइक दैट. तो एटलीस्ट नो यहाँ पे एक र्यूमर ऐसा होता है या फिर स्टीरियोटाइप लाइक दैट कि इफ यू आर अ फिजिसिस्ट और इफ यू लव फिजिक्स सो यू मस्ट बी वेरी गुड इन मैथ्स एंड इट्स एक्चुअली नॉट लाइक दैट कि अगर बस आप फिजिक्स पढ़ते हो यू आर गुड इन फिजिक्स सो यू आर वेरी गुड इन मैथ्स. इट डजंट डेफिनेटली मीन लाइक दैट. रादर फिजिक्स के लिए भी एक ऑब्वियसली एक लिमिटेड लेकिन जितना ज्यादा आपको मैथ्स आएगी उतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है दैट इज वेरी गुड थिंग. लेकिन फिर भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मैथ. लेकिन बेसिक मैथ्स में तो यू शुड बी वेरी गुड एंड फॉर्मूला शुड बी राइट एट योर टिप्स. सो दैट इज ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट. लेकिन आपको बहुत ही हायर लेवल की मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है. इट इज जस्ट बेसिक अलजेब्रा एंड ट्रिगो एंड कैलकुलस. ऑब्वियसली वो तो फिजिक्स में ही सीख लोगे. सो ये सब इम्पोर्टेंट है. Kendariya Vidyalaya School. Have you solved Concepts of Physics by H.C. Verma? Yes, I have solved it. Sanuraj Sinha, which foreign college do you dream to go? Trinity College campus. Bijoy Das, God bless you with infinite creative energy to invent new theories in math and physics. Well, thank you. Thanks a lot. Vishu XD, do you still study in 11 or you got promoted by 8 to 12 by school? Well, no, I'm in 8th standard for now. रोहित कुमार, हेलो ब्रो, तुम कैसे पढ़ाई कैसे करते हो यार? प्लीज शेयर Sarim. So obviously by reading books, as you can see कि यहाँ पे also there are lots of books put here. So I'll just read the mathematics required. I'll solve the problems. So you have Erodo, Proto. तो ऐसे problem solve करने के बाद obviously you will feel that much confidence in yourself when you are able to handle these problems. तब जब आप JEE problem solve करोगे, so obviously it will feel easy या फिर at least feel you feel speedy. So obviously तो अगेन आपको स्टडी करना होगा, उस लेवल के प्रॉब्लम्स फेस करने होंगे एंड दैट इज हाउ इट इज डन. Army status. Aditya Kumar, who is your favorite physics teacher in India? Well, in India, I can definitely say my favorite physics teacher is Ashish Arora sir. Pulkit Sharma, I face too much problems while tackling physics questions and getting motivated to see you solving such difficult questions. Which book do you prefer for NEET except NCERT? यहाँ पे नीट के लिए आई विल से एचसी वर्मा. लाइक बहुत लोग कहेंगे एचसी वर्मा लेवल बहुत हाई हो जाता है और समथिंग लाइक दैट, बट आई वुड से एचसी वर्मा आपको सॉल्व करना चाहिए. जो भी लेवल है उससे हायर ही सॉल्व करना चाहिए एंड देन ओनली यू आर एबल टू क्रैक दैट पर्टिकुलर थिंग. तो अगर जेई एडवांस का सपना है सो यू हैव टू गो अ लिटिल बियॉन्ड जेई एडवांस, तभी जेई एडवांस होता है और एटलीस्ट यू आर गेनिंग कॉन्फिडेंस इन दैट पर्टिकुलर थिंग. तो आपको एचसी वर्मा आई वुड से करना चाहिए. लास्ट के फ्यू क्वेश्चंस ऑब्वियसली स्किप कर सकते हो. No, except NCERT. So HC Verma you can do. And NCERT is something like many people tend to ignore it, but you should do it. NCERT is such a book because it is definitely not for waste. You should do actually NCERT. Don't just ignore it.
डेज पाई पर ब्रो कैन यू टेल मी आईआईटी में मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करूं? मैकेनिक्स इफ यू आर टॉकिंग अबाउट जेई देन आई वुड से मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगेन जैसे इट इज जस्ट समथिंग लाइक दैट कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए. So it is not just कि mechanics कैसे strong होगे. I'm just telling you physics कैसे strong होगी by solving more and more problems. लेकिन बहुत ज़्यादा problem solve नहीं करने. You have limited time. बहुत कम भी नहीं करने. You have to solve a moderate number of problems and बहुत simple नहीं करने. Most आप moderate solve करो and difficult solve करो. Don't spend lot of time. As you'll be solving more and more. So question solve करने के बाद many times you'll realize that you have learned new concepts. तो उसमें यू विल फील ग्रेट कि यू आर जस्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड यू आर लर्निंग न्यू कंसेप्ट्स. आपको नए नए ट्रिक्स याद आएंगे एंड देयर आर मैनी थिंग्स. बहुत बार आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे जहाँ पे कुछ ऐसे फॉर्मूलाज आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मिल जाते हैं जो कि बहुत ही यूजफुल होते हैं एंड यू शुड रिमेंबर दैट. बहुत बार ऐसी चीजें मिलती है ऐसे टर्म्स एंड यू शुड रिमेंबर. इट शुड बी एट योर टिप्स सो इट कैन बी वेरी हेल्पफुल इन मैनी ऑफ द केसेस. लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल देखें सो एक ऐसा केस आप देख सकते हो. एक इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक रखा है. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इज एंगल थीटा. तो उस केस में किस एक्सेलरेशन से ये इंक्लाइंड प्लेन मूव करेगा ताकि ये जो ब्लॉक ऑन द इंक्लाइंड प्लेन है ये स्लिप ना करे बल्कि वहां पे स्टैटिक रहे विद रिस्पेक्ट टू ए प्लेन ऑफ कोर्स. तो यहाँ पे सीधे ये जो एक्सेलरेशन द इंक्लाइंड प्लेन इज मूविंग दैट शुड बी इक्वल टू द जी tan थीटा. तो ऐसे जो कभी कभी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे एंड कुछ क्वेश्चंस में हाँ दैट इज फैजुल मिर्जा जी tan थीटा. सो यहाँ पे जो जी tan थीटा ये टर्म है यू शुड रिमेंबर इट. बहुत बार ऐसे केसेस मिलते हैं एंड यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स. तो जब यू विल रिमेंबर बहुत सारे दूसरे क्वेश्चंस में इट कैन फील प्रीटी इजीली. ओके सो Anurag Yadav, you should have to give IPHO. Well, yeah, definitely. But when I am eligible for that, of course. Zunurar, क्या आपने जब फर्स्ट टाइम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पढ़ी थी तो क्या आपको उसके बारे में सब समझ आ गया था? ऐसे नहीं होता है ना. तो प्लीज आप पेरेंट को समझाइए कि डोंट स्टॉप योर चाइल्ड. वेल ऑब्वियसली पहली बार में सब समझ नहीं आते. पहली बार में यू विल अंडरस्टैंड वेरी लेस ऑफ इट बट as you'll study more and more समझ आते जाते the more you are interested the more you are keen to learn new and new. तो समझ आते जाते you have to understand that. पेरेंट्स को समझाइए पहली बार में नहीं समझ आता है. The Indian Racer is R.D. Sharma book good for math toward the NCERT book. NCERT से obviously R.D. Sharma बहुत advanced है. So if you are solving R.D. Sharma that is pretty good. Fazul Mirza, do you understanding physics just by reading books or you have support in person like family member of or teacher etc? Obviously I have lot of support lekin to teach me there are just books. So in that case I would say books. Pulkit Sharma, it's just 4 months for NEET exam. Can I prefer DC Pandey over HC Verma? I think 4 months are not sufficient for HC Verma and I am able to solve physics. In this case में like I haven't read the NEET वाला, rather I have actually studied engineering. DC Pandey, HC Verma तो obviously दोनों के लिए same है. So in that case I would say 4 months maybe that is like about 120 days. HC Verma में तो as far as I can see 47 chapters हैं. एक last वाला chapter you ignore that. 46 units, dimensions, vectors तो obviously आपको पहले से आते होंगे. So 2 more chapters go out of that. तो यहाँ पे 44 चैप्टर्स बच रहे हैं. नाउ अब अगर देखते हो तो 44 चैप्टर्स सो इन दैट केस यू हैव लाइक मोर देन ऑब्वियसली 2 days समथिंग लाइक 3 days आपको मिल रहे हैं फॉर ईच चैप्टर. तो अगर उसमें भी एचसी वर्मा कवर कर सकते हो देन जस्ट गो. लेकिन ऑब्वियसली 4 मंथ से पहले ही फिनिश करना होगा वरना यू कैन गो फॉर दैट. इफ यू आस्क मी अ टिप दैट यू आर एबल टू सॉल्व फिजिक्स क्वेश्चंस तो फिजिक्स क्वेश्चंस एग्जैक्टली कोई भी क्वेश्चन हो एंड आप इंस्टेंटली स्ट्राइक कर जाओ तो उस लेवल को मेंटेन करने के लिए या फिर अचीव करने के लिए तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगी. बट एज फार आई कैन से यू हैव टू अटेम्प्ट जो भी आप डीसी पांडे या एचसी वर्मा कर रहे हो जस्ट ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस. दैट इज व्हाट आई वुड से
एंड डायरेक्ट आंसर नहीं देख लेना, बट रादर स्ट्रगल ए लिटिल बिट, एंड एज आई हैव टोल्ड, अगर आप कुछ केसेस को एकदम दिमाग में याद रखते हो, इन दैट केस आई वुड से इट कैन बी प्रीटी गुड व्हाइल सॉल्विंग अदर क्वेश्चंस. Okay, Himanshi Yadav, what is second law of thermodynamics? I wasn't able to see this question for pretty long, like it has been coming for too long. यहाँ पे जो second law of thermodynamics है, it is something like this कि जो entropy of a system होती है, ये हमेशा increase करती है. Now the thing is कि entropy of a system या फिर entropy of the universe ये कभी decrease नहीं करेगी, ये constant रह सकती है, या फिर जब भी कोई thermodynamic process होते है तब हमेशा increase करेगी. Or let's say it is something like this. To just explain it in some simple terms, मेरे पास I have a glass, मैंने उसे यहाँ से drop कर दिया. As it goes down, it will break into pieces. अब यहाँ पे जब it breaks into pieces, तो obviously आप देख सकते हो कि जब it breaks into the pieces, the number of not particles I would say, but the piece of glass that you have initially one था single, later on it increase. तो ऐसे ही होता है जब कोई thermodynamic process होता है, तो यहाँ पे एक्चुअल में एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज कर जाती है. सो दैट इज व्हाट इट एक्चुअली इज. Bomb fact 4.2 m, is that million? Hello sir. Well, hello. RJ Rocket Whitey, what book did you read at first for learning physics except A Brief History of Time? H.C. Verma. JEE aspirants, hi sir, I am in 12th now and I want to prepare for JEE means, so I still have time. What? January attempt. Well, January attempt, I would say. Obviously, you don't have that much time. So if you are considering for some other, so in that case, obviously, आपके dedication level पे अगर उतना 18 घंटा 20 घंटा बैठ सकते हो, so you can crack, I would say. But I wouldn't also recommend कि completely 20-22 hours बैठ जाओ. So that is obviously not. So in that case, but you should still try. You should still try, obviously. Qazi Muhammad Mars, why all the celestial bodies are in shape of sphere or oval? Generally, all planets, stars, etc. तो यहाँ पे अगर देखें तो ये सारी स्फीयर की शेप में इसलिए होते हैं क्योंकि हमें पता है ग्रेविटी अट्रैक्ट्स इट, इन सबको एक्चुअल में कंबाइन यूनिफाई करना चाहती है. लाइक से हमारी अर्थ कैसे फॉर्म हुई, यहाँ पे एक पार्टिकल, यहाँ पे एक रॉक, वेयर यू हैव सो मेनी पीसेस ऑफ रॉक्स. फिर ग्रेविटी, व्हेन ऑल इट इज ऑल अट्रैक्टेड बाय ग्रेविटी सच ह्यूज मासेस, तो ऑब्वियसली आपको पता है ग्रेविटी विल ट्राई टू कंप्रेस इट. ग्रेविटी से कम सरफेस एरिया में लाना चाहती है, इसे एकदम कंप्रेस, कि ताकि ये सब एक सिंगल पॉइंट पे आ जाए. जब ये कंप्रेस होता है तो सबसे कम सरफेस एरिया और द शेप ऑफ अ स्फीयर आता है. उसमें ऑब्वियसली थोड़ी सी डिफॉर्मेशन तो होगी ड्यू टू ऑब्वियसली सम मिसकैलकुलेशंस बाय दीज पार्टिकल्स. तो इस केस में ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि ओवल शेप आ सकता है. बट if you just consider ignore these things, तो obviously एक spherical shape आपको मिलेगा जो कि सबसे कम से surface area के लिए होगा. Mr. Thokar, bro, which is the best book for quantum mechanics? Well, it is said to be Griffith's quantum mechanics को obviously as something like starter माना जाता है. It is considered very good book, like I would say this one over here with a cat on it. तो इसे it is considered very good and I have even read it and it is actually a very good book. Like मैंने पूरा obviously अभी तक नहीं पढ़ा है, but I have read little and it's very good. Quasi Mohammed Mars string theory. It is the theory in physics जहाँ पे particles जो point particles elementary particles होते हैं उन्हें as dots नहीं बल्कि something like elongated strings माना जाता है. Jishan Siddiqui, class 9, when the Albert Einstein got the Nobel Prize for solar eclipse. He didn't get for solar eclipse. उन्हें photoelectric effect के लिए मिला था and it was he was nominated in 1921.
He got in 22. Pulkit Sharma, being a 8th class student, how are you able to understand such baggling concepts by just reading books? Something impossible to think, and how much hours you study as far as physics is concerned. So, yeah, it seems impossible. Like maybe it seems impossible, but again, I would say so. Not that I'm just doing this live streaming, or since over 2 or 3 years I've been teaching on YouTube. So in that case, you would see, if still there are just people who are thinking I'm just screaming and will try to write that I'm just screaming and making people fool. So in that case, I've been doing it for over 2 years. That is the thing. So obviously, at first, it might seem impossible, क्योंकि I'm not in your place currently, so it might seem impossible. But again, my interest is what actually derives me. मेरा interest to learn new things, या फिर to learn more and more physics, to understand physics. And if you think about how many hours I have been giving to physics, so in this case I would say कि बहुत बार it goes like very low, कि मैंने बस 1-2 घंटा या फिर some days half an hour किया. But sometimes it goes to very high, like 10 to 12 hours I will do. So the moments, the days that I actually study, when I have a target like मुझे ये book finish करना है, या फिर ये chapter पूरा पढ़ लेना है, ये पूरा topic खत्म कर लेना है. So in that case, when I actually study, so in that case it goes 10 to 12 hours. Mr. Thokar, bro, can you please explain that what are the tachyons? Tachyons is a very interesting concept, but at the same time, it is something like not that much reasonable concept according to relativity. Tachyons माने जाते हैं कुछ ऐसे particles जो कि light से fast travel कर सकते हैं. These are the particles जो कि light से fast travel कर सकते हैं. Mass तो obviously कोई इनके पास हो नहीं सकता, कोई positive mass हो नहीं सकता, non-zero. कि ये उस स्पीड से ट्रैवल करें. सो दीज आर कंसिडर्ड सच पार्टिकल्स, अभी तक डिस्कवर नहीं किए गए, बट द थ्योरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग ऑब्वियसली. Jishan Siddiqui, class 9. What is the best way to study physics? Obviously, best way to study physics is first learn the required mathematics. उतनी mathematics आने चाहिए. And उसके बाद if you consider is to try to analyze. It's not just about reading कि आप ये chapter पढ़ लो and you are done. Physics is all about कैसे आप उस chapter को daily life में use कर सकते हो. And don't try to only solve such problems कि acceleration given है, mass given है, आपको force निकालना है, या फिर कितना भी difficult हो, कितने भी खतरनाक mathematical techniques needed हो. Try to also solve more and more creative problems. Creative problems obviously solve करने में बहुत मजा आता है, in which you have something of a physical phenomena, जहाँ पे सिर्फ मैथमेटिक्स नीडेड नहीं हो या फिर फॉर्मूला नहीं, आपको दिमाग लगाना होगा. You have something of a physical phenomena. You have to solve these kind of problems and try to even guess at the result. आपको you can only say that particular time कि आपने कुछ समझ लिया है, when even without solving the question आपको roughly answer पता होगा. So that is, अगर at least answer का form पता होगा. So that is one thing that you have to learn it. Pulkit Sharma, it felt so proud that someone is there in India who can actually compete internationally in various Olympiads and exams. Thanks for making India proud, and hats off to your dad for such support. Well, thanks for your kind blessings, and I will definitely go for Olympiads. And indeed, I am waiting for that. क्योंकि अभी तक I am not eligible. Qazi Muhammad Maz, what do you think? It is possible to travel faster than light, because light is also very slow as compared to this huge universe. हाँ, the second point you have mentioned कि light is very slow compared to this huge universe. इसके जो vast distances हैं, तो obviously बहुत बड़े हैं. Even light will take millions and billions and trillions of years to travel across it. लेकिन अगर बात करें कि क्या is it actually possible for some object to travel faster than light? In that case, I would say कि according to the current level of understanding, possible नहीं है. According to the current level of understanding. Rashmi Kumari, how much mathematics should we know to have strong physics like you?
Mathematics, it is also not that much of a mathematics to at least learn J level तक की. But I have also gone something like introductory undergraduate level physics. उस केस में you have to learn calculus. कैलकुलस थोड़ा और एडवांस लेवल पे आपको समझना होगा. ऑब्वियसली वो तो 11th 12th की मैथ्स में जब कैलकुलस पढ़ोगे वो दैट विल बी डन. तो कैलकुलस जैसे टॉपिक्स थोड़ा और एडवांस्ड कंपेयर टू एवरेज आपको सीखने होंगे. कृष्णा, व्हाट इज मीन बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअल में वो पर्टिकुलर जगह होती है जहां से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को या फिर उसके स्टेट को ऑब्जर्व कर रहे हो. सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली फ्रेम ऑफ रेफरेंस. लाइक अगर मैं इस चेयर से बैठ के किसी कार को देख रहा हूँ तो मैं मेरे लिए ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहां से मैं उस कार की मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ. अगर मैं किसी ट्रेन में बैठ के किसी ट्री को देख रहा हूँ विच इज पासिंग बिहाइंड, तो मैं उस ट्री की स्टेट ऑफ मोशन को गर्न कर रहा हूँ या फिर उस एक्चुअल में डिसाइड कर रहा हूँ फ्रॉम द ट्रेन. सो द ट्रेन इज माई फ्रेम ऑफ रेफरेंस. यू हैव टू अंडरस्टैंड. 42 Satvik Paul, why does atmospheric pressure do not act on freely falling body? Obviously freely falling object पे atmospheric pressure act करते हैं. Okay, why does atmospheric no, that is do not. तो यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे एक्ट करता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी बैलेंस्ड. लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन आ जाते हैं. लाइक इन केस यू हैव समथिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट, उसको आपने ड्रॉप किया, उसकी जैसे एलिवेशन चेंज होगी, हमें पता है प्रेशर चेंज होगा. यहाँ पे प्रेशर ऑब्वियसली चेंज हो सकता है विद एटमॉस्फेयर. जैसे वो नीचे आता जाएगा तो ऑब्वियसली बहुत ही छोटा सा हल्का सा डिफरेंस होगा, बट इट इज वेरी गुड अगर आप इसे एनालाइज करने की कोशिश करते हो. सो प्रेशर एक्चुअल में एक्ट करता है. J aspirants, which book is perfect for J means for Hindi medium? So you have to understand that Sivarma Hindi language may be a level है, so in that case you can go for that. Daredevil, how to study physics effectively. How to actually study physics on that particular topic, I guess I have already shot lots of videos, so you can just go and watch that. The tips that I have told, they worked at least for me, so they might work for you. Ayush Tiwari, how to tackle the physics questions in JEE mains. तो you have to understand कि obviously सारे questions भी जरूरी नहीं है कि आपको attempt करने ही करने हैं, at least in question paper when you are in exam hall. तो you have to rather spend time on the questions जिनकी आपको surety है कि solve हो जाएगा. That is first thing. And पहले आप वो questions attempt कर लो जो कि आपसे easily solve हो जाएंगे. In the remaining time you can try on the other questions. कभी भी किसी question पे बहुत ज़्यादा time spend नहीं करना चाहिए. Rather just move on. जब हम लोग question paper में ऐसे you are trying to practice when you are normally sitting practice, तब तो I would say कि spend days on a particular problem. So but when you have lots of times, then you spend days on a particular problem and it will be cool. Zunurar, what is the shape of a point? Well, point का basically कोई shape नहीं होता है. And Karthik Sani, what is del operator? Del operator actually में ये 3 forms में आता है. Basically if you consider it, del operator या फिर इसे nabla कहा जाता है. So what it basically does is कि del operator is a mathematics में, and here it is actually कि mathematics में क्या होता है कि del operator is something like we wanna explain it. जैसे मान लो आपको force and potential के बीच का relation निकालना है. Force and potential. उस केस में potential energy rather, force and potential energy. You can directly say कि अगर किसी भी body का motion या फिर change in potential energy कुछ भी हो, वो x के along हो रहा है axis. So you can just write that the force along x is negative derivative of potential energy with respect to x coordinate. वो आप easily कर सकते हो. लेकिन जब यही x, y and z all three के along होगा तब आपको जब x में ये derivative निकाल रहे हो y z component कांस्टेंट रखना पड़ेगा. तो यहाँ से बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट आ जाता है. सो डेल ऑपरेटर इज जस्ट टू रिप्रेजेंट दिस काइंड ऑफ थिंग जो पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग एक्चुअल में करते हैं. सो दैट इज यहाँ से बेसिकली 3 कंसेप्ट्स आते हैं. सो दैट इज व्हाट इट एक्चुअली इज. दैट इज ग्रेडियंट, दैट इज डाइवर्जेंस. तो ऐसे यहाँ पे बेसिकली जो कंसेप्ट्स आते हैं, अगेन इट विल गो इनटू वेरी मच मैथमेटिक्स.
if I get even deeper in it. Pulkit Sharma, any last doubt? Sorry for too many doubts. Why a solid sphere in a rough plane takes less time while in the smooth plane? Time take is the same for anybody, and why we neglect air resistance in questions? Well, it's okay if you're asking too many doubts still, but I actually couldn't understand कि आपके पास एक solid sphere है and वो rough plane में है and it will take less time while in the smooth plane. Can you please type that again? Like, I'm not able to understand this. And if you ask why you neglect air resistance in questions, तो obviously that is for simplicity only. वो सिर्फ simplicity के लिए है and nothing else. अगर आप चाहो उन्हें अकाउंट में भी ले सकते हो. It is just प्रॉब्लम्स और लेंदी हो जाती है एंड जे में लाइक देयर वाज अभी जे मीन में ही देयर वाज सच अ क्वेश्चन जैसे आप काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन देखोगे जहाँ पे आर रेजिस्टेंस ऑलरेडी लिया गया है इसलिए आंसर थोड़ा उसका क्वाइट लेंथी था सो मोस्ट ऑफ द टाइम इसे इग्नोर किया जाता है कभी कभी सिंपल वे में आर रेजिस्टेंस को एज अ फंक्शन ऑफ स्पीड दे दिया जाता है लाइक जे मेन में दैट इज अ क्वेश्चन कि ऑब्जेक्ट को शायद प्रोजेक्ट किया गया है एंड उस पे जो एयर रेजिस्टेंस एक्ट करी ऑपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ कोर्स वो एक्ट करी एज अ कांस्टेंट के टाइम्स स्पीड एट द इंस्टेंट का स्क्वायर तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एयर रेजिस्टेंस स्पीड पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है दैट इज द रीजन यहाँ पे आपको कैलकुलस लगाना पड़ता है एंड द क्वेश्चन वाज ऑब्वियसली टू फाइंड द टाइम इट विल टेक टू रीच मैक्सिमम हाइट. Unknown, what you're doing if you feel lazy or not want to study at any time or at any day, then what steps you follow to go back to study. Obviously, if you don't want to do that particular thing, like as I've told you, okay, I'm not like very much कि हमेशा all the time I'll be studying. कि all the months I'll be studying, rather all the months I would quote. लेकिन कभी कभी I get very serious and कभी कभी I will get very loose. I'll get very serious जब मेरे पास कभी कोई टारगेट हो जाए कि मुझे ये फिनिश करना है सो इन दैट केस आई वुड से कि जब भी मुझे लेजी फील होता है और आई डोंट वांट टू स्टडी एट एनी टाइम सो प्रोक्रेस्टिनेशन इज इटसेल्फ अ डिस्ट्रैक्शन आप कह सकते हो प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट जस्ट अ वेरी गुड नॉट जस्ट गुड थिंग तो if you're feeling to procrastinate so what you have to do is कि जो भी आप उस इंस्टेंट पे कर रहे हो और यूजिंग फोन और एनी एल्स थिंग यू हैव टू स्टॉप दैट राइट एट द मोमेंट जब भी फील हो कि 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद फिर स्टडी करना है सो जस्ट थिंक दैट नॉट आफ्टर 5-10 minutes जस्ट स्टॉप दैट राइट एट द मोमेंट एंड स्टार्ट एट द वेरी सेम इंस्टेंट and don't even think just you have to go and take books just do it at the moment without thinking. Otherwise, the more you'll think about it, the more you'll want to procrastinate. Krishna, in projectile motion, why not acceleration in horizontal component? Acceleration horizontal component में listen gravity हमेशा नीचे होगी तो एक बात तो ये मिल गई acceleration horizontal component का होता है horizontal acceleration होगा लेकिन वो air resistance का होता है projectile motion में air resistance simplicity के लिए इग्नोर कर दिया जाता है तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टली ग्रेविटी तो है नहीं तो हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन नहीं लिया जाता है Oh, I see. Pulkit Sharma, solid sphere takes less time down an incline in rough plane, while in the smooth time taken by any body is same. Why? अच्छा, I finally get your question. If I am able to understand it correctly, तो यहाँ पे basically the question is something like this. आपके पास एक inclined plane है, एक solid sphere. दो different cases imagine करें. एक solid sphere यहाँ से अगर मैंने सॉलिड स्फीयर को इंक्लाइन के नीचे से ऊपर फेंका उसका कोई टाइम t1 कैलकुलेट कर लिया फिर उसी सॉलिड स्फीयर को ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन मतलब फ्रिक्शन है ऊपर से मैंने नीचे कर दिया एंड यहाँ पे जो टाइम टेकन होगा ये t2 होगा तो जब ये ऊपर से नीचे जाएगा उसको कंपेयर करेंगे टू द अपवर्ड मोशन तब ये t2 इज लेसर देन t1 मीनवाइल एक स्मूथ इंक्लाइन के लिए यू विल हैव टू सी कि ये बेसिकली
टाइम सेम होगा फॉर द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन? दैट्स क्वेश्चन, राइट? बेसिकली इट इज समथिंग लाइक दिस कंसेप्ट कि जब ये आपके पास एक रफ इंक्लाइन होगा, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, पहले स्मूथ इंक्लाइन के लिए, स्मूथ इंक्लाइन के लिए जब ये ऊपर जाएगा, विल हैव टू सी सिर्फ mg sin थीटा नीचे एक्ट करेगा, कोई दूसरी एटलीस्ट अलोंग द इंक्लाइन फोर्स नहीं है, अलोंग द इंक्लाइन कोई दूसरा एक्सेलरेशन नहीं है, बस g sin थीटा का एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड मोशन में। तो ऑब्वियसली टाइम विल बी समथिंग लाइक, जो कैलकुलेट कर लो, तो समथिंग ऑफ एन इनिशियल वेलोसिटी से जीरो वेलोसिटी हो रही है, ऑब्वियसली आपको पता है कि जो टाइम होगा दैट विल बी सेम, अगर जीरो से उतनी वेलोसिटी हो रही है विद द सेम एक्सेलरेशन, यहाँ पे टाइम सेम आ जाता है। एक रफ इंक्लाइन होगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होता, ये डिपेंड करेगा ऑन द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाती है तो फ्रिक्शन नीचे एक्ट करता है, ग्रेविटी भी नीचे एक्ट करती है। अब फ्रिक्शन ग्रेविटी दोनों साथ में एक्ट करते हैं, साथ में बॉडी को डिसेलरेट करते हैं, टाइम एकदम, तो यहाँ पे बेसिकली व्हाट यू विल सी, साथ में डिसेलरेशन हो रहा है, तो टू रीच एट दिस गिवन पॉइंट ज्यादा टाइम लगेगा, या मीनवेल इफ यू कंसिडर ओवर हियर दैट विल बी कम टाइम लगेगा एक्चुअल में टू गो अप टू द डिस्टेंस दैट इट इज ट्रैवलिंग, डिस्टेंस भी कम होगी। इफ इट इज एट द टॉप ऑलरेडी एंड तब इसे नीचे स्लाइड करने, यू विल सी फ्रिक्शन की डायरेक्शन पीछे एंड mg sin थीटा की डायरेक्शन आगे है अलोंग द इंक्लाइन, तो यहाँ पे टाइम डिफरेंट हो जाएगा। So it is due to the change in direction of friction, due to the change in direction of relative motion, यहाँ पे एकदम एक्सेलरेशन जो नेट है वो डिफरेंट हो जा रहे हैं एंड उसकी वजह से टाइम अलग अलग आ जाते हैं। Jishan Siddiqui, class 9th, which is the fastest thing in the world in present time? Obviously, it is light itself. Unknown. Please tell your father to give us blessings for our upcoming exams. दिल से ब्लेसिंग्स है भाई, आप लोग जाएं अभी से प्रिपेयर करें और पास हो, अच्छे मार्क्स से पास हो। ये ब्लेसिंग तो सारे बच्चों के लिए हमेशा, जो भी हमसे हो सकता है हमसे हो सकता है हम करते हैं। और अगर सारिम से भी अगर कुछ हो सकता है तो आप क्वेश्चन इन्हें भेज सकते हैं और जो ट्राई करेंगे जितना हो सके वो सॉल्व करके देंगे। Definitely. Rahul Garia, bro, I'm big fan of your. I want a favor from you. Can you please check what I'm doing on Rahul Garia? Well, I'm not getting this, Rahul Garia. Okay, it's your channel. I will. Well, thanks. Mr. Ultimate Facts, Sarim, what is white hole? White hole basically एक ऐसा concept है, it is something like this कि जहाँ जैसे कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के अंदर आता है एंड इट विल स्टे अंदर, वैसे व्हाइट होल ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद कोई ऑब्जेक्ट व्हाइट होल से बाहर आता है। सो एक्चुअली पर्सनली लाइक आई डोंट बिलीव अ लॉट इन दिस कंसेप्ट, क्योंकि ये सेकंड थर्मोडायनेमिक्स लॉस को वायलेट करता है। Rasa V. Thankachin. Sorry if my question is silly. Weight of a body is minimum at poles or center of earth. तो weight of body poles पे maximum होगा. You have to understand, weight of body poles पे maximum होगा. अर्थ के सेंटर पे एकदम यू गो एट एकदम सेंटर, वहां पे weight of a body is 0. इक्वेटर पे मिनिमम होता है। सो अगर इक्वेटर के अराउंड कहीं हो वहां पे वेट मिनिमम होगा, जो पोल्स है वहां पे मैक्सिमम होगा, एंड सेंटर पे यू आर इन दैट केस ये इट इज नॉट जस्ट मिनिमम कि इट इज एक्चुअली 0। एंड यहाँ पे इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड 0 क्यों है, सो इमेजिन आपके पास यहाँ पे अर्थ का सेंटर है, एक पूरी स्फीयर इस सेंटर को इट इज कवरिंग इट। अब यहाँ से स्फीयर का ये वाला जो पार्ट है जिस फोर्स से इसे इधर पुल कर रहा है, सिंस ये सेंटर है तो इक्वल ये डिवाइड कर रहा है, स्फीयर का ये वाला पार्ट उसी फोर्स से इसे वही फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ये वाला पार्ट उसी से, ये वाला पार्ट उसी से, इट इज गोइंग फॉर ऑल दीज साइड्स। इसलिए जो नेट फोर्स हो जाते हैं ये 0 हो जाते हैं। वेट इज 0 एट सेंटर, मिनिमम एट इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट पोल्स।
Pulkit Sharma, why friction acts in the same side while we walk? It is actually helping you to walk. क्योंकि यहाँ पे you are exerting force backward, तो obviously friction will be forward and that is helping you walk. पबजी फ्लाई गेमिंग भाई मैं आप जैसे तेज कैसे हो सकता हूँ? Again you'll have to study a lot and reduce gaming of course. Zunurar, what to do? Become a physicist. Physicist बनने के लिए again it will be a bachelor's degree, a master's degree, and then PhD. तो BSc, MSc, PhD. Quasi Muhammad Maz, what do you think about wormhole? Is it possible to travel longer distances in smaller time interval of time with the help of wormhole, and then we don't need speed of light? What do you think? हाँ, wormhole is pretty interesting concept and obviously it is possible. लेकिन अगर wormhole create किया जा रहा है, and the problem is wormhole create ही नहीं किया जा रहा है. Currently we are not able to create a wormhole. लेकिन if we are able to, and obviously it's a real concept. It's been suggested by Einstein's relativity, general relativity. So in that case, हाँ, it is possible to travel larger distances and in different events of time. अगर आपके पास wormhole है. Ali Drawing Academy. What is friction? Friction is basically an opposing force जो कि relative motion between two bodies को हमेशा oppose करती है. If you want to exactly understand friction, so you can like watch my videos. Few days ago only there was on Newton's laws of motion. उसमें friction was covered. Rahul Guzar, I am impressed by your videos. Well, thank you. Study wala, bro, can you please advise me some important books to get interest and start for JEE? मतलब अभी आप start कर रहे हो, so you must have passed 10th standard for now, and उसके बाद if you are currently in 11th standard, physics के लिए तो I would definitely say कि physics के लिए I would say आप HC वर्मा से start कर सकते हो, और अगर एकदम competition नहीं चाहिए, you can go for DC Pandey or something. मिस्टर अल्टीमेट फैक्ट्स बीटेक के बाद फिजिसिस्ट नहीं बन सकते क्या? वेल अब बीटेक इज समथिंग लाइक मोर ऑफ अ डिग्री इन टेक्नोलॉजी, तो इन दैट केस बीएससी इज बेटर अगर आपको फिजिसिस्ट बनना है. बीटेक इज लाइक अ डिग्री इन टेक्नोलॉजी, राइट? पबजी फ्लाई गेमिंग, व्हाट इज वोल्टेज? वोल्टेज अगर आप डिफाइन करना चाहो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, ये समहाउ दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल के का डिफरेंस, एज द नेम सजेस्ट पोटेंशियल का डिफरेंस बताते हैं. अब पोटेंशियल का डिफरेंस इज समथिंग लाइक रिलेटेड कि आपको कितना वर्क करना पड़ेगा ऑन अ यूनिट चार्ज. आपको समझना है कितना वर्क करना पड़ेगा ऑन अ यूनिट चार्ज, या फिर ये फील्ड कितना वर्क करेगी अगर आपको इस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है. Quasi Muhammad Mas, you said in different events of time, it means you are indirectly said it works as time machine, right? That is, I said that ki haan, it works as a time machine. So Nirman Khan, hello, hello. Yeah. Okay. Pulkit Sharma, how are we able to understand about space just from Earth, like Jupiter is gaseous, and also tell me about too many moons in Jupiter. It is something like this कि हम लोग अर्थ से ऐसे ही, क्योंकि वी हैव लाइक थिंग्स लाइक हबल स्पेस टेलीस्कोप, नाउ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, तो अब इन्हीं चीजों से वी हैव अंडरस्टूड दिस मच, या फिर देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया rather than understanding even before 50s and hundreds of years of the discovery of black hole की theory already very well developed थी. So that is what you have to understand. There are predictions and there are obviously observations by telescope. Nirman Khan, I'm Madara Uchiha. Well, in that case, you should be in Naruto verse for now.
Captain Ayush, what do you think about parallel universe? Is it possible or just a theory? Parallel universe is a pretty interesting concept. Multiverse is also interesting concept. Well, maybe it is possible, maybe not. तो जब तक we don't have a theory of everything, we cannot definitely say कि हमारे पास ये universes हैं कि नहीं, क्योंकि आइंस्टाइन की relativity तो हमें अपने universe तक की ही चीजें explain कर सकते हैं. So for now we cannot exactly say. PUBG Fly Gaming, bro. How many hours do you study? As I've studied, when I don't study, I roughly study 1 and 2. When I study at all, so I go from 8 to 10 to 12. That is the Indian racer. Are you interested in space? Well, obviously, I am definitely interested in space. Rahul Garia, in which time do you study? In my time at 12, I learned to read perfectly. Well, I started studying physics from about 10, age of 10. That is. As funny video. After 12th, what to do, BTech or BA? I am aiming for BSc, of course. Pulkit Sharma, can you tell me something about time dilation? Can it be possible something like time machines and go in future and past? टाइम डायलेशन एक ऐसा कंसेप्ट है कि कैसे आप समहाउ, क्या इट इज ऑल्सो अबाउट टाइम ट्रैवल, लेकिन कैसे आप समहाउ जब ट्रैवल करते हो वेरी क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट, तब आपके लिए टाइम स्लो हो जाता है, लेकिन बाकी ऑब्जर्वर्स के लिए उसी रेट से चलेगा. तो समहाउ जब यू विल आफ्टर 1 ईयर, लाइक आई एम जस्ट टेकिंग अ रेफरेंस, इट्स नॉट एग्जैक्ट, एक साल में एक ट्रेन में ट्रैवल करने के बाद विच इज गोइंग एट रफली द स्पीड ऑफ लाइट, नॉट एग्जैक्ट, क्लोज टू दैट. तो व्हेन यू विल कम आउट, तो आपके लिए एक साल पास हुए एंड पूरी वर्ल्ड के लिए इट्स बीन पास्ड over 10 years. I've just taken a rough reference like that. It need not be accurate. तो basically that is time dilation. तो यहाँ पे फ्यूचर में जाना तो पॉसिबल है इन एटलीस्ट दिस सेंस, लेकिन पास्ट में जाना इज नॉट पॉसिबल. टाइम डायलेशन ग्रेविटी की वजह से भी होता है. जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटी ज्यादा होती है, तो वहां पे टाइम जो होता है स्लो रेट से फ्लो करता है. सो अगेन इट इज जस्ट द वेरी सेम. That's Nirman Khan. I guess you had stopped watching anime, right? You told you had stopped it already. Quasi Muhammad Mas, you also must have some questions about our universe. So do you wanna to share with us as well? In that case, I would say like there are also lots of confusions that I have, and बहुत सारी मतलब ऐसे questions हैं rather than confusions. मैं अपने current level की क्या मैं कह सकता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस हैं विच आर समथिंग लाइक एटलीस्ट प्रॉब्लम्स यूनिवर्स के बारे में. सो करेंटली एंड लाइक आई एम नॉट रिमेम्बरिंग एग्जैक्टली, करेंटली तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है. बट इन दैट केस आई वुड से जैसे फ्यू डेज अगो आई पब्लिश्ड अ वीडियो about pseudo force. So this isn't exactly about universe, ये physics से related एक concept है. I told कि pseudo force is as real as any other force. तो obviously वहाँ पे confusion हो सकता है pseudo force से imaginary force and all this stuff. But you have to understand it is a real force जब आप उस frame of reference में, उस frame of reference में नहीं हो. Pseudo force is imaginary. तो you'll have to explain कि real का मतलब क्या है. You'll have to understand. मतलब कोई चीज रियल है तो उसका मतलब क्या है. अगर आप उसकी इफेक्ट्स देख सकते हो, अगर किसी चीज के इफेक्ट देख सकते हो, तो ऑब्वियसली वो चीज रियल होनी चाहिए. if you're able to see ghosts, so ghosts must be real. in case you are able to see, तो ऑब्वियसली अगर कोई चीज आप देख रहे हो, ग्रेविटी को आप देख रहे हो और एटलीस्ट फील इट, ये रियल होनी चाहिए. तो जब आप किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली आई बिलीव, तो स्यूडो फोर्स इज सच अ कंसेप्ट. बहुत सारे लोगों के अलग अलग इसमें ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन व्हाट आई बिलीव, जब तक आप उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, स्यूडो फोर्स इज एक्चुअली अ रियल फोर्स. उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बाहर हो, स्यूडो फोर्स मींस नथिंग फॉर यू. दैट इज व्हाट इट मींस. तो as long as you are in that force,
In that frame of reference, pseudo force is actually an actual force. You have to understand, जिसके कोई origin नहीं है. Pulkit Sharma, quite funny question. Is time machine can be possible currently so that someone can travel in future in or in past? तो यहाँ पे टाइम मशीन ऑब्वियसली वो मशीन वाला तो आई वुड से करंटली मैं बिलीव नहीं करता हूँ और एटलीस्ट विद करंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजीज हो गया तो वी कैन ट्रैवल इन फ्यूचर इन पास्ट. तो लेकिन अगर वी आर डिफाइनिंग इट रिलेटिविस्टिकली मतलब वही टाइम डायलेशन स्पेशल या फिर जनरल रिलेटिविटी से तो फ्यूचर में ट्रैवल करना डेफिनेटली पॉसिबल होगा. कैप्टन आयुष हु इज योर फेवरेट फिजिसिस्ट? तो मेरा फेवरेट फिजिसिस्ट आई कैन से सर आइजैक न्यूटन एंड प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग. Uchiha Sasuke. Bro, I want to ask a question that during the famous experiment of quantum mechanics, the two slit experiments, why are there black and white fringes formed, but we pass light through only two slides? तो यहाँ पे this is a very quite interesting thing. अब ये जो slit experiment है, you'll have to say इसे कितने levels में define किया जा सकता है. ये जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है इसे आप दैट इज अ थ्योरी फॉर्मेट्स प्रिंसिपल कहा जाता है उससे एक्सप्लेन कर सकते हो. इसी को आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के कुछ दूसरे थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हो. इसी को आप कुछ और दूसरे थ्योरी से इसमें से सबसे एक्यूरेट होगी ऑब्वियसली क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी होगी. इट विल गो टू डीप अगेन व्हेन वी आर टॉकिंग क्वांटम मैकेनिक्स. इसको अगर मैं कुछ लाइटली इसको अगर डिफाइन करना चाहूँ आर देयर ब्लैक एंड व्हाइट फ्रिंजेस फॉर्म्ड जो कि अक्रॉस द स्क्रीन. अगेन यहाँ पे आप अगर देख सकते हो या तो आप इसे इंटरफेरेंस की वेब थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हो मतलब यहाँ पे लाइट इंटरफेयर कर रही है एट ऑल दीज पॉइंट्स. इंटरफेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा यहाँ पे ये मिल जाएगा. इसको फील्ड से करोगे तो लाइट को आपने कैसे रेप्रेजेंट लिया इलेक्ट्रिक फील्ड से कर लिया. सो यू विल हैव टू सी उसे ऐसे भी एक्सप्लेन किया जा सकता है. If you do it from Fermat's principle, which method I personally like a lot, तो Fermat's principle में light की जो wavelength होती है, it is something like this कि light की wavelength decide करती है कितने far तक light देख सकती है to detect the path कि ये जो path travel करने वाली इनमें से जिन points तक travel करने वाली सबसे कम time किस में लगता है and जो time सबसे कम लगेगा या फिर to be more accurate एक तो इसका statement हो गया जो time सबसे कम लगेगा. जब इसे और एक्यूरेट करते हैं तो एक ऐसा पाथ कि उसके नियर बाई पाथ से भी उतना ही टाइम लगेगा. दैट इज व्हाट फॉर्मेट्स प्रिंसिपल सेज. वेवलेंथ इज समहाउ अ मेजर कि लाइट कहाँ तक इसे डिटेक्ट कर सकती है इसे लाइक स्मेल कर सकती है. एंड ऑब्वियसली जब आप इन स्लिट्स को ऐसे यू विल बी ट्राइंग टू बेसिकली जस्ट क्लोज द स्लिट्स की बहुत ही छोटी ओपनिंग बची हो सो विद दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ आप बेसिकली क्या देखोगे लाइट वोंट बी एबल टू डिटेक्ट दैट मच फर्दर एंड एक सिंगल पाथ बच जाते टू गो फ्रॉम हियर टू हियर फॉर ईच पार्टिकल. सिंस बहुत सारे पार्टिकल्स हैं दे विल बी स्प्लिट ओवर दिस. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ से लाइट फेंका आप स्लिट है तो वहां जाके गिरी. लाइट यहाँ पे भी गिर सकती वहां पे भी. तो इसे या तो इंटरफेरेंस ऑफ फील्ड्स एंड लाइट के पार्टिकल्स एक्सप्लेन किया जा सकता है वेव्स एक्चुअली विद फर्मेट्स प्रिंसिपल से. एंड अगर उससे एक्चुअल में देखा जाए सो दैट विल बी आई वुड से अ बेटर. Nirman Khan, why intensity decreases for fringes farther away from the central line? Ab again, since it is an interference, so obviously it can be explained mathematically as far as I can see. At least for now, it will have to be explained mathematically. Okay, Mr. Ultimate Facts, what is butterfly effect? So you're talking about butterfly effect. It was, I guess, like I'm not very good in this. कि अगर मैं इसकी बात करूं तो I don't have a lot idea. But if we are talking about butterfly effect, so it is about bringing a tornado in some place by the flap of a butterfly's wings in some other place. So not that I have still completely understood this concept.
Sushant Saril Baral. Don't you think people with no interest in physics has contributed more in physics? Well, I cannot see how. Nah, Nirman Khan, no, you are wrong. You didn't mention about diffraction and interference together. Well, what are you talking about? Like your question or the previous ones? Larry, please explain how harmonic oscillation and waves are related to each other. Please, I am having trouble. इस पे मैंने I had also told a fact about it कि कैसे ये related है and कैसे different है. Harmonic oscillation basically एक body का होता है. You'll have to understand. Harmonic oscillation एक body का होता है जो कि basically इस amplitude से या फिर इस एक function sin या cosine function से move करती है. वेब आपको एक पार्टिकल की ट्रेसिंग मिलेगी कि पार्टिकल बेसिकली यहाँ पे यहाँ से ट्रांसवर्स वेब पास करे तो ये वाला पार्टिकल आया ये सडनली इस वर्टिकल वेलोसिटी या फिर कुछ भी आपका एक्सेलरेशन है उससे मूव करना शुरू किया तो एक वेब बेसिकली मान लो वेब ऑन अ स्ट्रिंग है तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रहे हैं दैट इज व्हाट इज द इंटरेस्टिंग थिंग इन दिस Zunurar, where was singularity situated? Singularity is basically, अगर देखा जाए singularity is where the universe began, right? या फिर अगर देखो तो ब्लैक होल के अंदर भी singularity है तो यहाँ पे स्पेस टाइम सिंगुलैरिटी स्पेसिफिकली जहाँ पे लॉज सारे लॉज ऑफ फिजिक्स ब्रेक डाउन कर जाते हैं मैथ्स काम नहीं करता तो एट द बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स देयर वाज सिंगुलैरिटी एज आई कैन थिंक even in the center of a black hole there is singularity. Nirman Khan, diffraction is what causes the intensity to fade away as we move away from the central line. Well, yeah, that's the thing. I couldn't say that. Well, विशाल इंडिया सारे में एक चीज बताओगे इलेक्ट्रिसिटी करंट कैसे चलता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लीज when you set or when you create an electric field तब यहाँ पे obviously charges are carried by electrons नहीं charges तो opposite to field वो obviously move करेंगे when they are opposite moving opposite to field एक पूरी stream of electrons flow करे तो उसी के opposite direction में मान लिया जाता है कि positive particles flow करे positive charges so that is what current actually is and I guess it's over 10 obvious already. So there have been many questions which I couldn't take up. So in that case, we'll be doing it someday once again. So guess for today it will be that's it only. And that was all for today. And thanks to all viewers. Bye.